Hello everyone. In this video, I will tell you about the pattern of question paper, especially for class 11th and 12th in ISC board. That is, you can say the CISC, New Delhi. Because in this year, in 11th and 12th, the council has changed the pattern of the question paper in mathematics. So therefore, I am going to tell you that is what will be the pattern of the question paper and what you will get in the board examination as well as in the home examination. In class 11 and class 12, both are the same because both classes follow the same pattern. 80 marks in this year, as you know, everyone, those are studying in the ISC board, that council has divided the 100 marks in two papers. One is the theory paper and other is the project paper. Means project, that is 20 marks project and 80 marks paper, theory paper. That is of you can say for the 3 hours paper. In this, how many types, means which type of questions will come and what will be the marks distribution. Especially I want to tell you the marks distribution of the question and how many questions will come. Means number of parts in every questions, are there is choice or not. That is it. First thing I want to tell you in this, for class 11th and 12th, both classes, there is no choice. You can say that all questions are compulsory. All questions are compulsory means if there are the 20 questions, then you have to do all the 20 questions. You cannot skip any question. But council has given the one type of choice, that is called the internal choice. No external choice. जैसे पहले होता था कि क्वेश्चन नंबर 8 में से do any 5 out of 8, मतलब 8 क्वेश्चंस में से 5 करिए या 6 में से 4 करिए, ऐसा 3 में से 2 करिए. But in this time, from this year, there is no external choice, सिर्फ internal choice. जैसे for example, if question number 2 is given, तो 2 एक question लिखा and then or the second question. So you can either do the first part of the question number 2 or the second part of the question number 2. वो बीच में R लगा रहेगा, or. तो और लगाए, it means you have to attempt anyone. But question number 2 is compulsory. कोई एक उसमें से करना है. Question number 2 is the number is compulsory. So just I'm going to tell you, there are the two sections. First of all, how the papers will come, the pattern. There will be the maximum marks 80 and time will be 2-3 hours. 15 minutes reading. That is given earlier, the 3 hours. जब question paper आएगा तो 15 minutes for reading, 3 hours for writing. Okay. And then all questions are compulsory and there will be 3 sections. Section A, first the section A. And section A will be of 65 marks. पूरा सेक्शन ए 65 मार्क्स का होगा. अभी मैं बताऊंगा कि ये 65 मार्क्स कैसे आ रहे. देन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, वो पहले लिखा होगा. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ओके, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सब में. बट there is a choice in section B and section C. Either you have to opt section B or you have to do section C. Because section B and section C, section B especially for science stream and section C for commerce stream. But you can opt
मतलब कोई भी साइंस स्ट्रीम वाला भी कर सकता है सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी का कोई मतलब नहीं है, और कॉमर्स स्ट्रीम वाला भी सेक्शन बी कर सकता है. टीचर विल चेक. In section A, question number 1, there will be 10 parts. In question number 1, there will be 10 parts, and there will be 15 parts. There will be 15 parts, and every part having the 1 marks. मतलब एक part इसका 1 marks का होगा, एक नंबर का. So it means this is equal to 15 marks. Total 15 marks. Question number 1. But there is a the first 10 questions will come objective type. ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो first 10 questions होंगे वो objective होंगे. Means you will have the option to write A, B, C, D 4 option होंगे, 4 option, and you have to write anyone. तो first 10 parts will be objective, and the next 5 parts, by 15 parts, next 5 parts will be short answer type. Short answer types means 3 lines, 4 lines, means you have to calculate and write the answer. मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का ये भी होगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा. This is the question number 1. Then question number 2 to question number 6. Question number 2 से question number 6 तक. These, how many questions are there? 2, 3, 4, 5, 6. Means 5 questions. These will be of 2 marks each question. 2 marks each. तो टोटल कितने होंगे? 10 मार्क्स. टोटल 10 मार्क्स. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. तो एवरी क्वेश्चन हैविंग द 2 मार्क्स, एंड यू विल गेट द 10 मार्क्स फॉर दीज 5 क्वेश्चंस. बट देयर आर सम इंटरनल चॉइसेस आल्सो इन 2 क्वेश्चंस. किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 and question number 5 have internal choice. Internal choice का मतलब क्या हुआ कि वही बताया भी हमने कि क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, उसके साथ में एक और क्वेश्चन दे दिया और करके, तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करना है या सेकंड पार्ट करना. जस्ट आई एम टेलिंग ओनली फॉर द ISC बोर्ड, not for the CBSE board. As a CBSE board may be there some different pattern, but in ISC board the same pattern will follow. Then question number, you can see here, question number 7 to 10, 7 to question number 10. These questions having 4 marks. ये 4 marks के होंगे. ये जो 6 तक का 2 marks का, ये 4 marks का. How many questions are there? 7, 8, 9, 10 means 4 questions. So 4 4s are 16 marks. Total 16 marks. मतलब 15 marks ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 10 marks, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 16 marks. And in these 7 and 10 question you will get in question number 9 and question number 10 you will have the internal choice. Again इंटरनल चॉइस यहां 2 और 5 में मिलेगी और यहां 9 और 10 में मिलेगी. इंटरनल चॉइस हो गई. देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14, दीज आर ऑफ 6 मार्क्स ईच. 6 मार्क्स ईच मतलब सारे क्वेश्चन के से 11 भी 6 मार्क्स, 12 भी 6 मार्क्स, 13, 14. तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 24 मार्क्स. ये 24 मार्क्स. नाउ यू कैन ऐड. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव द इंटरनल चॉइस? इन क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 you will get the internal choice. Internal choice. Now you can add these
24, 15, 10, 16. These the marks will have the 65 marks. मतलब complete. The section A is complete. क्योंकि 65 मार्क्स कंप्लीट हो गए. अब आते हैं सेक्शन बी, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है तो सेक्शन बी 15 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी भी 15 मार्क्स का होगा. अब हम सेक्शन बी की ओर करते हैं. In section B, again you have to do all the questions and this will be 15 marks total. तो 65 और 15 मिला के 18 है. But what is the mark distribution? How many questions will have the section B या section C? दोनों में, ये दोनों में सेम होगा. Section C, both having the same types of pattern of questions. Question number 15. Question number 15 में how many parts are there? There will be the 5 parts. 5 parts. And every parts having the 1 marks. मतलब 1 marks each. So 5 into 1 means 5 marks. Everything. But again, first 2 part will be objective and first 2 parts in these 5 parts will be objective and next 3 parts will be short answer. क्योंकि पता है कि शॉर्ट आंसर जो एक नंबर के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, यू कैन सी द वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे जिनका कि काफी कम में लिखा जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 will be of 2 marks. Question number 16 will be of 2 marks. And in this there is a choice, मतलब internal choice भी मिलेगी. Internal choice. Question number 17. Question number 17. There is again the 4 marks question. One question will be there, and here is also the internal choice. मतलब 16 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा लेकिन एक इंटरनल चॉइस होगी, मतलब एक और क्वेश्चन साथ में दिया गया होगा. 17 में भी सेम लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. बट क्वेश्चन नंबर 18 विल बी अ 4 मार्क्स एंड नो चॉइस इज देयर. कोई चॉइस नहीं. नाउ यू कैन ऐड 5 2, मतलब ये मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं. 5 2 4 एंड 4. ये मार्क्स अगर ऐड करो तो 15 मार्क्स आ रहा है. 4 4 4 4 8 2 10 5 15 टोटल 15 मार्क्स. तो बाय दिस वे you can understand or you can ask to your teacher also, that is this is the mark distribution and also the types of question, how the questions will come in the board examination as well as in the half yearly, pre-board, anyway. That is for classes 11th and 12th. So if you see the video, then you will get the sufficient knowledge. And also if you subscribe, then also you will get the time to time some more information about your studies. Thank you.